Good morning, students. Hope you understand the causes, various symptoms of the sickness of the industrial unit. Now, what are the consequences of the sickness? The main consequences of enterprise sickness are emergence of industrial unrest, wastage of your resources. आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर कंपनीज बंद हो रही हैं, ठीक है, आपके वेस्टेज होंगे रिसोर्सेज के, loss of revenue to the government also, financial losses of bank, financial institutions, loss in the employment opportunities, adverse impact in the prosperity of the entrepreneurs, hardship to the public, and market fluctuation. In a nutshell, whatever may be a reason of the sickness, the consequences are always the same, like loss on employment and production, economic hardship, chronic unemployment, and shortage of your goods. This industrial sickness is the strain in the country's economy, and you have seen this. जो हम आजकल कह रहे हैं विकास हुआ या नहीं हुआ, इसमें आपने देखा बहुत सी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल एरियाज में लोगों को इफेक्ट ज़्यादा पड़ा, ठीक है. Many of the people lost their jobs because of the COVID and all. So these are all the consequences that you are seeing around you, and you can explain this with like this in details also. The huge financial loss in the bank and financial institutions. You आप देख रहे होंगे आजकल रोज न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि बैंक जो है आपके बंद हो रहे हैं, और बहुत सारे उनके एनपीए बढ़ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर इंक्रीजिंग, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द बैंक्स. If they don't have a liquidity, then how they will give you the loan, how they will give you financial support. Then risk in industrial unrest rises in industrial unrest. अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा इसकी वजह से, अनरेस्ट अगर होगा, दे ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट होगी, स्ट्राइक्स होंगे, लॉकआउट्स होंगे, विच क्रिएट अ अनफेवरेबल इन्वायरमेंट for the employees. Then it adversely affect the prosperity of investor and entrepreneur. आपके मार्केट में शेयर्स डाउन हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स जो है दे फील डिमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ ऑल दिस, एंड this will negatively impact their motivation level also. एंड गवर्नमेंट का रेवेन्यूज जो है वो डाउन हो रहे हैं, टैक्सेस चोरी हो रहे हैं, ड्यूटीज आप पे नहीं कर पाएंगे, तो it also affect the earnings of the government. Unemployment problems, workers जो हैं आपके सिक हो रहे हैं. According to the estimation made, nearly 30 lakh workers are affected due to the closure of sick and weak unit. आप देख रहे होंगे जो आपके लेबर होती है, अगर एक फैक्ट्री बंद होती है, आप देखते हैं उस लेबर की पूरी फैमिली आपके कम से अगर वहाँ पर लेबर 100 लेबर काम करी, 100 फैमिली गेट अफेक्टेड विद दिस sickness. So you see how sickness is badly affect the economy, badly affect the moral level of the employees and the economy. And इसके resources are wasted. जो resources आपके इतने कम है, जैसे माना कोई sick unit है, बंद पड़ी है, ठीक है, there are n number of sick units in रुद्रपुर also जो बंद पड़ी है, मगर एक रिसोर्स जो होता है हमारा स्केयर रिसोर्स लाइक लैंड and other resources are wasted because of that. They are not earning anything. Now, how to prevent prevention of sick units? How we can prevent it? The term lending institutions, commercial banks, entrepreneurship, government unit falling sick has been studied extensively about this. Ki how to revive these sick units combinedly, and some units are born sick and some units are made sick, and in case some units sick is thrust up of them, ठीक है. The four groups play a dominant role in preventing the unit from falling sick. तो देखिए, कुछ तो बोन सिक हैं जिनको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ है जिनको जानबूझ के सिक बना दिया जाता है, कुछ जो है अपनी ही गलती, अपने थर्स्ट एरियाज की वजह से सिक हो रही हैं, ठीक. तो दे फाइंड आउट दैट, एंड
These four institutions play a very important role in reviving the sick unit, like term lending institutions, commercial banks, entrepreneurs, and the government. First, term lending institution. If the term lending institution take the following step, sickness can be prevented, like proper appraise the management of the project, ascertaining the marketability of the end product of the unit before lending, extra care in assessing the suitability, technical feasibility of the plant and machinery, and ensure timely implementation of the project. जहाँ से आप टर्म लोन्स ले रहे हैं, अगर वो प्रोजेक्ट ही आपका पहले बहुत ध्यान से बहुत रिगरसली ड्यू डिलीजेंसी करेंगे, तो वहीं पर आप लोग के प्रोजेक्ट के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं कि वो सर्वाइव होगा नहीं होगा पता चल जाता है. ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस they can also prevent the sickness. Then commercial banks, since commercial bank are one of the one providing resources for surviving successfully, they can also take the prevention steps like noticing that the withdrawal in an account does not exceed the permissible drawing power continuously over a period of time, frequently scrutiny of the ledger account with the master intelligence, frequent interaction with the entrepreneur and all. So ये नहीं कि आपने लोन दिया उसके बाद आपने उसमें कोई भी इंक्वायरी नहीं करी कि कैसे कंपनी रन हो रही है, कैसे चल रही है. ठीक है, तो अगर आप उस समय भी अगर आप एक्टिव रहेंगे तो भी आप हो सकता है कि सिक होने से यूनिट को बचा पाए. देन entrepreneur, the successful running of the unit surely depend on the availability and the sustainable efforts of the entrepreneur. It is the entrepreneur who conceive and implement and manage the project to avoid the sickness in the unit. The entrepreneur also play a very important role. He is the person who make the things possible. So they can also revive it by selecting the supplier of the machinery with care, doing a homework very properly, paying adequate attention to the deficiency in the unit, careful selection of the partners. इफ़ दे डू ऑल दिस थिंग्स, इसीलिए आप देखते होंगे किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप फंडिंग के लिए जाएंगे, सबसे पहले वो इंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स को इवैल्यूएट करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरप्रेन्योर इज. अगर इंटरप्रेन्योर इफेक्टिव है और अपने आइडियाज़ को लेके बहुत क्लियर है और मेहनती है, then only a sick unit can be revive from their present condition, or they make their business successful. Then government too can help in controlling sickness by not making sudden changes in the industrial policies, and several changes related to existing units, policy to discourage new investments, withdrawal of subsidies, and opening up reserve item for a big industries. by by all these things, by their action, government can also promote small scale industries. Clear? So these are the role which can be played by different stakeholders to make the organization revive. And you can explain these things with the help of these points also, by identifying the sickness in initial stage. अगर initial stage में आपने sickness identify कर ली, then also you are able to revive. And improving the infrastructure, infrastructure facilities आप दे दें, अच्छी करें. Industrial state, common testing centers if they are good, and in technology upgradations अगर आप करते रहे time to time, तो your product cannot be obsolete. Marketing assistance आप ले सकते हैं NGO से, and government interventions हैं, periodic review of financial statements. Government can also help in identifying and preventing the sickness in initial stages. Then training, proper environment आप बना रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मिल सके, चाहे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की. दैट ऑल्सो हेल्प the companies. In next class, this is all about your sickness of the unit. Ki how to revive, what are the causes, what are the remedial measures that we can take to revive the sick unit. Now, institutional support for SSI.
This will be covered in the next lecture. Thank you, students.